हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हाउ विल कैरी आउट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैथमेटिकल इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस। बेसिकली कैसे हम इंटरफेरेंस को मैथमेटिकली ट्रीट करेंगे। ओके, सो व्हाट इज इंटरफेरेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसा कि आपने पहले डेफिनेशन में देखा था, व्यतिकरण या फिर इंटरफेरेंस क्या होता है। इट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ न्यू वेव पैटर्न सच दैट देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी। दिस इंटेंसिटी कैन बी आइदर मैक्सिमम और आइदर इट कैन बी मिनिमम। ओके, सो बेसिकली व्यतिकरण क्या है? कोई भी दो तरंगों का अध्यारोपण जिससे कि नई तरंग फॉर्म होती है, जिसमें या तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीव्रता का, या तो वो न्यूनतम हो सकती है या फिर वो अधिकतम हो सकती है। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज कंसीडर करके चलते हैं कि हम दो वेव्स का सुपरपोजिशन कर रहे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और फेज डिफरेंस उसमें कांस्टेंट है और दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो ऐसी दो तरंगे हम कंसीडर करेंगे और उन दो तरंगों का अध्यारोपण करेंगे जिनका आवेश सेम है, कलांतर भी सेम है और दोनों एक ही दिशा में मूव कर रही है। सो लेट अस कंसीडर the superposition of two waves of same frequency omega and a constant phase difference. Constant phase difference phi traveling in same direction. Okay, अब उनके एम्पलीट्यूड को हम मान लेते हैं A1 and A2. Let their amplitude be amplitude are taken as A1 and A2 respectively. The displacement due to one wave the displacement due to one wave
at any instant is given by let's say phi1 is equal to A1 sin ओमेगा टी. ठीक है. सो बेसिकली इन दो वेव के एम्पलीट्यूड हम कंसिडर करेंगे कि A1 और A2 है, और इसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी इसका विस्थापन कितना होगा. उसका विस्थापन हम मान के चलते हैं कि वो psi1 होगा, that is equal to A1 sin omega t. So their amplitude are taken as A1 and A2 respectively. The displacement due to one wave, यानी किसी एक तरंग का विस्थापन मैं मान के चलता हूं कि मेरा psi1 है, that is equal to A1 sin omega t. So amplitude are taken as A1 and A2, and the displacement due to one wave at any instant is given by psi1 is equal to A sin omega t. अब किसी दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट हम मान के चलेंगे psi2, और उससे एम्पलीट्यूड हो जाएगा A2, और तो क्या हो जाएगा मेरे पास में दूसरी वेव psi2 is equal to A2 sin omega t plus 5. So write out and the displacement due to another wave at same instant is given by psi2 is equal to A2 sin omega t plus 5. Okay. Now interference says what? We have to superimpose these two waves. Okay. So to superimpose this wave, what will calculate as the resultant as phi1 plus phi2. So according to the principle of superposition, the resultant displacement phi r is given by, write down, according to principle of superposition, the resultant displacement psi r is given by adding 1 and 2. Okay. So you can write down psi r is equal to psi1 plus psi2. Now substitute it. A1 sin omega t plus A2 sin omega t plus 5. Okay. Now let us expand using sin a plus b format. That is, sin of a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, right?
So let us write down, expanding and writing it down. A1 sin omega t plus A2 sin omega t into cos phi plus A2 sin phi into cos omega t. Now taking the like terms aside, we'll get A1 sin omega t plus A2 cos phi sin omega t plus A2 sin phi cos omega t. Okay. Now take sin omega t as common. What you will get? A1 plus A2 cos phi plus A2 sin phi cos omega t. Okay. So now suppose we want to convert this into form of sine of omega t plus theta. So for that we will take the assumption as we will take A1 plus A2 cos phi as A cos theta, okay, and A2 sin phi as A sin theta. Right? Yes, so we can write down assuming A1 plus A2 cos phi is equal to A cos theta, okay, then A2 sin phi is equal to A sin theta, right? Now what we'll do? So the new equation of phi r will become phi r is equal to sine of A sin omega t plus theta, right? So to calculate intensity, as we all know, intensity is proportional to the amplitude square. So we need to calculate the amplitude square. So how you can get amplitude square from these equations? Just if you know that a square cos square theta plus a square sin square theta is nothing but a square, because cos square theta plus sin square theta is 1. So what we have to do? We have to square 3 and 4. We have to square it and add it. Okay. Squaring and adding the equations. Squaring and adding the equations. Three and 4 we have, what will have? We have a square bracket, we will have cos square theta plus sin square theta is equal to a1 square plus a2 square cos square 5 plus 2a1 a2 cos 5 plus a2 square sin square 5. Now again, if you look closely, we have over here is a2 cos square 5 and a2 square sin square 5. If we add these two terms, what we'll get? As cos square 5 plus sin square 5 is 1, we'll get as a2 square. So we can write down now a square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi, right?
So this is nothing but our intensity. Okay. Now if you want to calculate the angle theta, so it can be calculated as how much? If you divide 4 by 3, so dividing 4 by 3 you will get what you will get? A sin theta divided by A cos theta, that will be equal to A sin theta we have assumed to be A2 sin 5 and A1 plus A2 cos 5 as A cos theta. So just substitute these values, you will get A2 sin 5 divided by A1 plus A2 cos 5. Okay, so A and A will get cancelled. Sin theta by cos theta will give you tan theta, that is equal to A2 sin 5 divided by A1 plus A2 cos 5. Okay. Now we'll calculate the conditions for constructive interference and condition for destructive interference. ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, राइट, यूजिंग मैथमेटिक्स. So let on condition for constructive interference. जैसा कि हमने पहली वाली क्लासेस में भी देखा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन द टू क्रस्ट एंड क्रस्ट मीट्स ईच अदर they will add up and form a maximum intensity. Okay, so here the key point is we have to get our intensity as maximum. So already in the previous equation we have derived the intensity equation to be I is equal to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos 5. ओके, तो ये ऑलरेडी हमने इंटेंसिटी की इक्वेशन डिराइव कर ली थी. अब ये इक्वेशन मुझे देखने की मैक्सिमम किन पॉइंट्स पे हो सकती है. सो बेसिकली अगर इस इक्वेशन को मैं देखूंगा, ये इक्वेशन मैक्सिमम तभी हो सकती है जब मेरे पास cos 5 की वैल्यू 1 है. और cos 5 की वैल्यू 1 कब कब होती है, वेन एवर द एंगल इज 0 डिग्री, ओके, और 2 पाई और 4 पाई, or you can say up to 2n pi. So I can say that whenever the phase difference is 2n pi, it causes constructive interference. So it is maximum at the point, is maximum at points where the values of cos 5 are plus 1. Okay, that is phase difference 5 will be phase difference
phi will be how much? 2n pi. Okay. Now hence we can write what will be the I maximum now. I maximum will be a1 square plus a2 square plus 2a1 a2, which if we closely see is the formula for a1 plus a2 whole square. Now again look, we have I max is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. Now just see, the quantity marked in green and the quantity circled in blue pen. Okay, so which one is greater? Of course, the quantity which is marked in green will be greater. So we can say I max is greater than a1 square plus a2 square. So we can write it down that I max is greater than a1 square plus a2 square. What does it mean? a1 square is nothing but intensity 1, intensity due to the first wave, and a2 square is nothing but intensity due to the second wave. So we can say the maximum intensity will be greater than sum of the squares of intensity of the two independent waves. Okay, so we can write down the resultant intensity will be greater than sum of individual intensity of the wave. ओके, सो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं आई मैक्स इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और a1 प्लस a2 होल स्क्वायर, अगर इसमें इन एम्पलीट्यूड अगर मेरे इक्वल हो गए a1 प्लस a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, देन व्हाट विल बी माय आई मैक्स? इट विल बी 4a स्क्वायर. सो यू कैन राइट डाउन इफ a1 is equal to a2 is equal to a, then I maximum will be a plus a whole square, or you can write down 2a का whole square, that is 4a square. Okay, so this will be I maximum. Right, now we'll see what are the conditions for destructive interference. Condition for destructive interference. Okay, now again what we'll do, जैसा कि मैंने पहली वाली क्लासेस में बताया था कि जब भी मेरे क्रस्ट और ट्रफ मीट करते हैं तो देयर विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड. ओके, इसकी वजह से क्या होगा? मिनिमम इंटेंसिटी हमें मिलेगी. सो हियर द कीवर्ड इज मिनिमम. सो वी वांट आवर इंटेंसिटी टू बी मिनिमम. ओके, सो द कीवर्ड हियर इज अगेन minimum intensity. So first of all, again we will write the intensity what we have obtained earlier. So I is equal to
a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. Again, when this value can be negative, whenever the value of cos phi is -1, and search for the intervals where the cos phi is -1 is at pi cos phi is -1, at 3 pi cos phi is -1, at 5 pi cos phi is -1, so on and so forth. Okay, so you can say that at 2n plus 1 pi अगर मेरा phase difference है, then this is forming a destructive interference. Okay, so what will be the value at this point? Whenever cos phi is minus, then new intensity will be I is equal to a1 square plus a2 square minus 2a1 a2. This is nothing but formula for a1 minus a2 whole square, or you can write down I minimum is equal to a1 minus a2 whole square. Correct? Now again look this whole red one and this blue encircled one. Okay, so if you look closely, which value is greater? Of course a1 square plus a2 square will be greater, as it is the red one we have minus 2a1 a2 is subtracting, so that value will be lesser. So we can say I minimum is less than a1 square plus a2 square. So you can write down I minimum is less than a1 square plus a2 square. Okay, or you can say the minimum intensity is less than the sum of squares of individual or independent intensity of the wave. Thus, in the case of destructive interference, the resultant intensity will be less than the sum of individual intensity of wave. Okay, now again if we both the amplitudes are equal, that is a1 is equal to a2 is equal to a, then what minimum intensity will get? A minus a whole square, that is 0 square, that is equal to 0. Right? So I minimum value when both the amplitudes are same, then we will get 0. Okay, now we have the condition for destructive interference and for constructive interference. Now we will draw a intensity versus phase plot. Okay, so on x-axis we will plot phase and on y-axis we will plot intensity.
So now suppose this is phase 5 and this is intensity I. Okay. Now let's draw this for the condition A1 is equal to A2 is equal to A. So whenever A1 is equal to A2 is equal to A, then we have the value of I maximum that has been calculated earlier come out to be 4A square, and value of I minimum came out to be 0. Now let's plot these points. So on the point 0, what will have? Cos phi will be positive and the intensity will be maximum at this time. Okay, so we'll get the point somewhere here. It will be 4A square. Now let's go to the point pi. So whenever we go to the pi, the intensity will reach to 0, as it is a condition for destructive interference. Now again let's go from pi to 2 pi. Again it will have the amplitude of 4A square, as the intensity is maximum at this point. Then if you take 3 pi, again 3 pi is 2n plus 1 pi. So the condition over here is destructive interference, so the value will go to 0. So at 2 pi it was maximum, and again on 3 pi it will go to 0. Again on 4 pi it will go to maximum, and on 5 pi it will again go to 0. Then 6 pi it will go to maximum, and 7 pi again it will come down to 0. Right? Again on left side minus pi. Okay, so in minus pi again it will be 0, and minus 2 pi again it will be maximum 4A square, and minus 3 pi again it will be 0. Then minus 4 pi it will be maximum, minus 5 pi it will be 0, and on minus 6 pi it will be maximum. So now just plot these points. Now just join these points. So we'll get a wave pattern like this. Okay. So this is how intensity versus the phase is plotted. So basically this point over here is representing bright fringes, and this point is representing dark fringes. Okay. So this was the analytical treatment of इंटरफेरेंस. ओके, सो लास्ट में हमने इंटेंसिटी का प्लॉट बनाया, जिसमें हमने क्या देखा कि A1 और A2 इक्वल टू A को मान के चला कि मेरे दोनों एम्पलीट्यूड जब इक्वल होंगे, तो हमने ऑलरेडी आई मैक्स कैलकुलेट किया था कि आई मैक्स मेरा क्या होता था, A1 प्लस A2 होल स्क्वायर होता था. अगर A1 और A2 इक्वल है तो क्या होगा, वो
a1 a प्लस ए होल स्क्वायर, ए प्लस ए कितना होता है 2a होता है, 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, तो इसलिए मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आ गई 4a स्क्वायर आ गई। और मिनिमम में क्या होता है a1 माइनस a2 होल स्क्वायर होता है, तो अगर दोनों इक्वल है तो a माइनस a 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इसलिए मेरे पास मिनिमम में 0 आएगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का बोथ में हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास में मिनिमम इंटेंसिटी होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉसिबल है एट द फेज डिफरेंस ऑफ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना था, इट वाज 2n पाई, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस phase difference was 2n plus 1 pi. So hence at the value of 0 there is constructive interference, so the intensity will be maximum, okay, and at the value of pi it will be destructive interference, then the intensity will be minimum and that is 0. Again on 2 pi it will be maximum, again it will be 4a square, on 3 pi it will be 0, so on and so forth. It will form a following plot. Okay, thank you very much.